Hello students, now we will start with the topic that is a magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. ओके तो जैसे कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी कल हमने देखा है कि जो भी हमने क्लास 10th में पढ़ा है उसका हमने रिवाइज किया है। तो उसमें क्या पढ़ा है हमने कि डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, राइट? वो किस रूल से दी जाती है, दैट इज अ राइट हैंड थंब रूल। देन उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है। लेकिन अभी जो हमको जो पढ़ना है दैट इज अ induced magnetic field. Why we call it as a induced magnetic field? Because it is not due to the magnet, it is due to the current carrying element or the current carrying wire. Okay, so in that we will see that is a Biot-Savart law. Biot-Savart law. तो बच्चों बायोट-सावर्ट्स लॉ में क्या पढ़ना है हमको कि हमको एक बेसिक डेरिवेशन हमको चाहिए, दैट इज एक बेसिक फॉर्मूला हम देखते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? So magnetic field, to find the magnetic field, Biot-Savart law, what they are saying that let's say there is a current carrying element, this is a current carrying element, okay, not current carrying element, we will say that the current carrying wire, okay, it is carrying current I. So due to this wire there will be the magnetic field, let's say this is point P, okay, and we want to find out what is the magnetic field at this point. Due to this small portion of wire we call it as dl, and this whole idl we call it as current element. What is this idl? What is this idl? Current carrying element or current element. So it is a vector quantity, So what is its direction? Direction of dl is same as the direction of current. Okay, now we have to find this dB. So I think you know everything that it is a who is the pioneer for this magnetic effect of electric current? Hans Christian Ørsted. Okay, and this dB we have already seen that, or simply B, magnetic field, it's a vector quantity, its SI unit is Tesla. All these things, all these basic things we have already studied when we have taken the revision of class 10th standard. Okay, now यहाँ पर देखेंगे कि what is this magnetic field. So who has given the formula? Biot-Savart law. So this is the basic formula, that is the same formula like a Coulomb's law. So what is this formula? It says, okay, first of all we will find the direction. So from the right hand thumb rule, so this is the magnetic field, this is the direction of current. So here the direction of magnetic field is into the plane that we know already. Okay, so let's say this point is at a distance r. What is the distance? At a distance r. Okay, and this is the angle between this is the angle theta. Theta is angle between current element dl and this vector r. Then what the Biot-Savart says, that this dB is given as, dB can be given as mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square. If you want to write it in a vector form, so it is dB, vector dB, mu 0 upon 4 pi I dl, instead of sin theta we will write vector r. So we have added one r, so here we will write r cube. Okay, so now mu 0 may be the new term for you. So what is mu 0? Permeability of free space, like a permittivity of free space, epsilon 0 in the electric field. So it is permeability of free space, So what it represents? It represents magnetic property of the medium, ना, जिसका वैल्यू होता है mu 0 is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 in SI unit. SI unit तो आपको easily करने आता है unit and dimension से. So what is mu 0? That is, you know that its unit is Tesla meter square per ampere. Okay, so this can be the unit. Okay,
Now we will not go in that much detail about this. So these are the basic things. And another thing that another unit for this dB means magnetic field, that is a Gauss. Okay, so and 1 Gauss is equal to 10 to the power minus 4 Tesla. Okay, now what we are interested in is, okay, let me tell that this formula is same like in the case of electric field. So in electric field, what we have written, that E is equal to KQ by R square. Let me tell this difference also. KQ by R square. So what is the source of the electric field here? Charge. So charge is a what is this charge? A scalar quantity. But in case of the dB, what is the source? That is what is the source to find this to produce this magnetic field? That is a current carrying element, that is ideal. So it is a vector quantity. So this is the one difference. So it is charge, it is due to the ideal, it is a scalar quantity and it is a vector quantity. What is the similarity? Both are inversely proportional to R square. What is the meaning? That both are the forces due to both the fields are long range forces, that you already know. Okay, then next thing, this R, in this case this R is a radial distance, that means from the one point to another point joining the straight line. Here this is not the case. This R depends upon the theta. This R depends upon the theta. And this, in this formula there is a no angle. Here in this formula there is an angle. Okay, so these are the similarity or the dissimilarities what you will have to take into the account. ये आपको जब account लेना है तो आप ऐसे करके आप इसको account में ले सकते हैं. Okay, now what is given to us? यहाँ पर हमको यहाँ पर करना क्या है? ये वाले यूनिट में हमारे को पहला पार्ट पढ़ना है, that is find the magnetic field. अभी हमको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए. अभी तक कि हमने क्या पता किया था अर्लियर क्लासेस, that is a direction, nature and all. Now we want which value. Okay, so we make use of this basic formula by the Biot-Savart, and we modify the formula for the other current elements. Okay, current elements means छोटा सा एलिमेंट नहीं बात कर रहा हूँ. करंट एलिमेंट्स मतलब दूसरे के एलिमेंट, करंट कैरिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, एक लॉन्ग वायर होगा, एक सर्कुलर लूप होगा, सोलेनॉइड होगा. सो फॉर दैट इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, ये वाला हम इसमें देखेंगे. ओके, सो लेट अस डिराइव द वन डेरिवेशन फॉर magnetic field due to the straight current carrying wire. Okay, so let me take this. So इसमें हम क्या करेंगे, एक हमारे पास फाइनाइट वायर है, ये एक फाइनाइट वायर है. सो इसमें से करंट जा रहा है I. ओके, अगर इसमें से करंट I जा रहा है तो मुझे यहाँ पर ये वाला एक पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट P. व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट? आई हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं जो हमको पता है ऑलरेडी. तो दिस इज द बाय द राइट हैंड थंब रूल. सो द डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. फॉर यू इट इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, फॉर मी इट इज इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड. ओके, अभी इसमें हमको दिया है दैट दिस इज द करंट flowing through this wire, finite wire. You can name this wire A, B, X, Y, whatever. Okay. अभी हमको दूसरी चीज क्या दी जाएगी कि ये एंगल अगर थीटा है, क्योंकि हम लेंथ की इसमें फॉर्मूला डिराइव नहीं करते हैं. लेट से दिस एंगल इज थीटा 1 एंड दिस एंगल इज थीटा 2, है ना. एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा. हम इसको रेफरेंस लाइन मानते हैं, ये है D. ओके, एंड दिस इज द करंट कैरिंग एलिमेंट, दिस इज द करंट कैरिंग वायर. तो बच्चों आप बोलोगे सर अभी हमें करना क्या है? तो अभी हमें करना ये है कि ये BP पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. कैसे करेंगे? जो बायोट-सावर्ट ने जो लॉ जो दिया है उसको यूज करके ये वाला फॉर्मूला मॉडिफाई करेंगे. व्हाई? बिकॉज दिस फॉर्मूला व्हाट वी हैव रिटन, dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl sin theta upon r square. This formula is true only for the current element. Okay, so we have to modify the formula when we get the some other modified structure. Extended structure मिलता है ना. छोटा सा वायर नहीं मिलेगा हमको, बड़ा कुछ तो मिलेगा, है ना. मान लेते हैं ये वाला ये वायर है, ये वायर है ना.
फिर दूसरा बोलेगा कि सर ये इनफाइनाइट वायर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। फिर बोलेगा कोई सेमी इनफाइनाइट है, ये वाला तीसरा स्ट्रक्चर हो गया। कोई बोले सर सर्कुलर लूप है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कोई बोलेगा सर ये दिस इज अ सर्कुलर लूप, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कोई बोलेगा सर सोलेनॉइड है, कोई बोलेगा टोराइड है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है। सो विच फॉर्मूला वी विल यूज, वी विल मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। आई एम रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ओके, सो सेम थिंग वी हैव टू डू। क्या करेंगे, यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे, ये रहा हमारा एलिमेंट एक। ओके, डीएल, यहाँ पर क्या है डीएल। तो मैं क्या करता हूँ, डीएल मैंने ये वाला रेफरेंस पॉइंट लिया है यहाँ से, तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है ये, y डिस्टेंस पे। व्हाट इज दिस एलिमेंट, dy, एंड यू नो दैट व्हाट इज द करंट कैरिंग थ्रू दिस I। सो यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिस इज द dy। ओके, एंड लेट्स से दिस इज I dy, करंट कैरिंग एलिमेंट। ओके, चलो ये वाला फाइंड आउट हो गया I। So let's say what is this? It is at a distance y. Okay, 4 pi r. R means what is r? Distance from the current carrying element to the point where we have to find out the magnetic field. जहाँ पर भी magnetic field find out करना है, वहाँ पर हम क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे, है ना। इसके लिए अभी मैं दूसरी पेन यूज करता हूँ। दिस ओके, अभी मुझे ये पता है, ये नहीं पता, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, तो मुझे ये वाला ऑलरेडी पता है दैट इट इज अ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, और ये वाला जो एलिमेंट जो है, लेट्स से दिस इज एट एन एंगल थीटा। बेटा देखो, जो भी ब्लैक पेन में लिखा है वो सब हमको गिवन है ना। ये सब हमने ये वाला इसमें से निकाला, ये है ना, ये हमने एज्यूम किया है कि ये वाला एंगल थीटा है ना। ये भी हमने मॉडिफाई किया है इससे थोड़ा सा, मेकिंग यूज ऑफ द गिवन क्वांटिटी, है ना। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, आपको पता है कि इसका वैल्यू कितना होगा। ओके, नाउ this is a mu 0 4 pi I we know, dl sin theta we know, so we will write first. So here dl sin theta is equal to what? Okay, now again see this is theta. Okay, let me write dl is equal to how much, it is dy. Okay, r square is equal to how much, r square, here in this formula we will write r square as y square plus d square। देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल। ओके ओके, दैट इज आर स्क्वायर। नाउ साइन थीटा, सो हियर व्हाट इज साइन थीटा। देखो बेटा थीटा तो ये है ना, हमें ये वाला थीटा नहीं चाहिए, हमारा थीटा ये है। सो व्हाट इज दिस, इफ इट दिस इज थीटा, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज थीटा, दिस इज हाउ मच, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, this is 90 minus theta, so this will be how much, 180 minus 90 minus theta, that is equal to 90 plus theta। बेटा ये वाला ही एंगल चाहिए, तो यहाँ पर sin theta क्या हो जाएगा, 90 plus theta। we don't want this angle because in formula our angle is not this, our formula the angle is this, this is the angle we are interested in। ओके, बच्चे यही गलती करते हैं कि वही थीटा यूज करते हैं, इसको ही थीटा समझ लेते हैं। ये वाला थीटा इसमें का जो है ये वाला थीटा है, राइट। द नेम इज गिवन एज अ थीटा, डोंट कंसीडर दैट, यू विल टेक दैट थीटा ओनली। ओके, नाउ दिस फॉर्मूला विल बिकम dB इज इक्वल टू, ओके, सो साइन थीटा दैट यू नो दैट इट इज अ cos theta, so this dB is equal to how much, mu 0 upon 4 pi I dl, it is dy, sin theta it is cos theta upon r square, that means how much it is, y square plus d square। ओके, तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dB is equal to mu 0 upon 4 pi I dy upon y square plus d square into cos theta। what is the cos theta, that is d divided by y square plus d square to the power half। okay, now can I write this dB as, dB is equal to mu 0 I d upon
mu 0 I d upon this 4 pi into dy डिवाइडेड बाय, बेटा देखो इसका पावर है 1, इसका पावर है हाफ, दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2, टू द पावर 3/2. ओके, नाउ बेटा हमको dB नहीं फाइंड आउट करना है, dB नहीं फाइंड आउट करना, वी हैव वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल वायर. ओके, so for that what we will use, we will use our great weapon, that is a integration. So we know that dB, B is equal to integration of dB, that is equal to how much, mu 0 I d upon 4 pi integration of dy y square plus d square to the power 3/2, है ना. आपने मैथ्स में अगर इंटीग्रेशन किया है तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, दैट इज b विल बी इक्वल टू mu 0 I d upon 4 pi, so it is y upon d square under root of y square plus d square, इसका इंटीग्रेशन होता है. ओके, लेट्स से दिस इज द लेंथ, यहाँ से हमने लिया है, ये वाला वायर है, लेट्स से दिस इज y1, दिस इज अ y2. ओके, या तो इसको y, ओके y1 and this is y2. okay, yes, where this y, or you can name anything, let's say a to b, a to b, जो भी आपकी मर्जी है. ओके, so this y, you know that is, it is from a to, or we will write b to minus b to a. Okay, so here minus b to a. So this d is constant, this d will cancel out, so it is mu 0 I, ये d यहाँ इसी वाले d से गया, so it is 4 pi into y. So now tell me y upon under root of d square, in under root of y square plus d square, what is this? What is this? What is this? This is the sin theta. So here it is d sin theta. When it is a and this is b, so this is how much? This is minus theta 2 to theta 1. Okay, so if we find it, mu 0 I upon 4 pi d into sine of theta 1 minus of sine of minus theta 2, that is equal to mu 0 I upon 4 pi d into sine of theta 1 plus sine of theta 2. So this is the expression for b. ये बेटा ये जनरल एक्सप्रेशन है. कौन सा एक्सप्रेशन है ये? जनरल एक्सप्रेशन है वायर के लिए. ओके, सो दिस एक्सप्रेशन वी विल यूज. ओके, लेट्स से सपोज वी हैव नॉट गिवन दिस एंगल थीटा 1 थीटा 2. क्वेश्चन में हमको बोला है ये है अल्फा और ये है बीटा. Yes, we can easily write. See, this is a theta 1, this is what? This is the theta 1, this is the 90 degree. What is the value of alpha? Okay, what is the value of alpha? So we can easily find out that this alpha is equal to 90 minus theta, right? So here we can say, whenever if you want to replace this alpha, so you can write it as, replace this theta 1 and theta 2, we can write mu 0 I upon 4 pi d into cos of alpha plus cos of बीटा. ओके, ना यहाँ पर बेटा कुछ भी हो सकता है ना, मीन्स कुछ भी, मतलब 2-3 केस हो सकते हैं. लेट्स से इंस्टेड ऑफ फाइनाइट वायर दिस इज इनफाइनाइट वायर. लेट्स से दिस इज इंस्टेड ऑफ फाइनाइट वायर दिस इज द infinite wire. That means this angle will goes on increasing. So here it will be 90 degree. This will also be the 90 degree. We will put here the 90 degree. So if it is a 90 degree, sin 90 plus sin 90, that is a 1 plus 1. Sin 91 होता है 1 plus 1 2 divided. This is 4 divided by 2. It will become 2. So the answer will be mu 0 I 2 pi d. Okay, हम इसको ऐसे ही replace कर सकते हैं. Okay. So this is the way we can, okay, for semi-infinite, let's say it is finite. So this angle will become 90. This will become 0. This will become
0. Okay, so it will be mu 0 I upon 4 pi d for semi infinite. So in this way we can calculate. Okay, please note down.